बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5th क्लास के प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हम इंग्लिश में पढ़ रहे थे द कैट्स पैराडाइज, पेज नंबर 73 हमने पढ़ा। अब आप निकाले पेज नंबर 75। अब आधा इसी का हमें पढ़ना है। मैं रीडिंग करूँगी, आप सुनना, फिर आप रीडिंग करना घर पर। Lois heard rustling. He turned and saw 3 men carrying garbage out of the street. He raced to inspect it. He longed for a nice piece of meat, a little salmon and some caviar. He rifted through the bags, but he found just 3 dry bones. Tom, Lois could see, was an artist. He rifted through the garbage slowly and diligently, and he found a few strips of thin, stale meat. As the cold rain fell onto Lois, all he could think about was his warm, dry prison, where a bowl of salmon and caviar surely awaited him. When the sun began to rise, Tom looked at him and wrinkled. You have had enough of life out here, haven't you? I have, Lois said meekly. Do you want to go home? Tom asked. I do, Lois said. But how do I find my house? Tom wearily shook his head. When I saw you leave your house yesterday, I knew a fat cat like you was not meant for the jobs of freedom. Follow me. Lois followed Tom along cobblestone streets, up to slate rooftops, along paths he barely remembered. Soon they were at Jerry's window. Tom turned to him and said, Here you are. Goodbye. Lois could not bear to leave his friend out here in the wilds. Come with me, Lois said. I will share my bed and food. Jerry is generous. Tom waved a paw. I had died in there with all those fluffy pillows and rich foods. That is for weaklings. I need to be free. He turned and jumped up on the roof and disappeared. Lois slipped inside. When Jerry saw him, he screamed, Bad boy! But she gathered him in her arms and fed him caviar. Later, stretched out before the fire, Lois rested his head on his feather pillow and closed his eyes. Now he understood that the paradise was a place where he might be locked forever, but he would always have fresh meat, fluffy pillow, and a fire. That was paradise after all for a cat. That is. Thanks. अब मैं इसका मीनिंग बताऊंगी। ये कहानी जो इमाइल जोना ने लिखी है वो इस बिल्ली के मुतालिक जो बड़े ऐशो आराम के साथ चरी के साथ घर में रहती थी। अच्छे बिस्तर और उम्दा खाना उसको मिलता था, मैसर होता था। अब जब वो बाहर निकली, उसने वहाँ पे टॉम को देखा। अब उसने टॉम को खाने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा, हम गंदगी के ढेर से हासिल करते हैं। फिर वो टॉम बिल्ली थी, उसके साथ खाना ढूंढने लगी जहाँ बहुत ठंडी बारिश हो रही थी। लॉइस को बहुत ठंड लगी क्योंकि उसको नहीं आदत थी उस ठंड में चलने की। उसको आदत थी, उसको गर्म खाना मिलता था, अच्छा बिस्तर था। उससे बहुत डर लग रहा था क्योंकि वहाँ जानवरों को पकड़ने वाले इंसान भी थे। उसे गंदगी से खाना ढूंढने में बड़ी तकलीफ़ हुई क्यों वहाँ अच्छा खाना मैसर नहीं हुआ। इसने टॉम को बताया कि वो घर जाना चाहती हैं, लेकिन उसे घर का रास्ता मालूम नहीं। टॉम ने उससे कहा कि ऐसी मोटी बिल्ली हमारे साथ नहीं रह सकती और इसे आज़ादी का कोई एहसास नहीं है। बहरहाल टॉम ने इसे अपने साथ लिया और घर तक छोड़कर अलविदा कहा। लॉइस अंदर दाखिल हुई और चेरी ने इसे अपनी बाहों में पकड़ा और खाना खिलाया और साथ ही गर्म बिस्तर और आग फराहम की। अब